Bismillah Rahman Rahim, student. From today we are going to start our new topic, which is virology. We have studied bacteria, general bacteriology in detail in our last lectures, but now we are going to start a general study of viruses or characteristics or features or structure of viruses. Then you can ask any question after lecture. So now I am going to start viruses. Now question is, what is virology? Virology is a branch of microbiology that deals with the study of viruses, specifically for viruses. So what are viruses? Now I'm going to start introduction of viruses or general features of viruses. Viruses are a smallest infectious agent and simplest also. So smallest and simplest infectious agent. Virus do not possess cellular organization. It means viruses are different from other cells. Viruses are different from bacteria. Viruses are different from other unicellular or multicellular cells. Viruses are different from eukaryotic or prokaryotic cells, because eukaryotic, prokaryotic, unicellular or multicellular organisms are cellular in nature, but viruses are non-cellular in nature. Viruses do not possess cellular organization, and they don't fall strictly in the category of unicellular organism. So you should know about viruses. They contain only one type of nucleic acid, either DNA or RNA. But in other organism, both type of genetic materials can be present as con- since both types of nucleic material is also present like RNA or DNA. They synthesize other cells synthesize protein from RNA. Their genetic material consists of DNA, double standard or DNA, or standard or single standard. But uh, but uh, but the major a major thing is virus only have either DNA or RNA. It's not about double standard or single standard. It's about DNA or RNA. DNA viruses are classified in separate groups. RNA viruses are separate. So viruses are also obligate intracellular parasite. They divides only inside the cell. They are obligate. They are strictly intracellular parasites. They damage the cells, and they damage the cell by entering into the cell and multiplies inside the cell. So they are obligate, strictly intracellular parasites. Viruses are unable to divide outside the cell. In outer environment, viruses are mostly in crystalline exist in crystalline form or in non-living form, you can say. But as far as virology, as far as is the concern with you are student of um, viral nutrition or microbiology. So you should not use the word non-living thing. You should use the thing subcellular structure or no सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वायरस, ठीक है. सो इतनी सी बात है कि आप लोगों को ना जो है आम लेमैन की तरह वो वर्डिंग यूज़ नहीं करनी जो आम आदमी करता है कि नॉन लिविंग और लिविंग इन द बॉडी. सो इससे आप और जो आम बंदा है उसमें दरम्यान में जो डिफरेंस है वो पता चलता है. एंड viruses viruses depends for viruses they lack the enzymes necessary for protein and nucleic acid synthesis, and are dependent for replication on the synthetic machinery of host cells.
Viruses use synthetic machinery of host cell because they only have genome, they only have genetic material, but they don't have enzymes which are responsible for the replication of viruses. So they use host machinery for replication, for multiplication. It is another important feature for viruses. They multiply by complex process, they multiply by complex process and not by binary fission. In case of bacteria, in case of fungi, binary fission or other methods of uh, multiplication you have observed, but in case of viruses, viruses don't have binary fission phenomena. Viruses multiply inside the living cell, inside the host cell, by a complex process. हम इस कम्प्लेक्स प्रोसेस की स्टडी आगे चल के करेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस को हम आगे डील करेंगे, बट and another important feature is all antibacterial antibiotics, all antibacterial drugs are resistant to viruses because antibacterial drugs are responsible for killing of bacteria. They are synthesized, they are manufactured in the killing for bacteria, in the killing of bacteria, because different drugs damage different structure of bacteria, and that structure is not present in the viruses. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स वायरल ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो जो है नहीं दी जा सकती एंटीबैक्टीरियल वायरस की ट्रीटमेंट में। हाँ, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटल ड्रग ऐसी अप्रूव हो जाती है, एक्सीडेंटल कोई ड्रग जो है वो फिनोमिना एंटीबैक्टीरियल ड्रग जो एक्सीडेंटली एंटीवायरल के तौर पर भी एक्ट करना शुरू कर दे, तो ये एक नया फिनोमिना है, ये एक अलग फिनोमिना है कि हम इसको जो है स्टडी करते हैं फिर से कि वो किस वायरस के किस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो है वो एक्ट कर रहे हैं। Now we are going to start morphology of viruses. Viruses are much smaller than bacteria. It was their small size and filterability. What is filterability? They can pass through. They have ability to pass through a normal biological filter that can hold back bacteria. But viruses have the ability to pass through filter papers. But bacteria, because bacteria are much larger in size as compared to viruses, so bacteria are unable to pass through filters, but viruses can pass through filters. And they are ultra microscopic structure. They were also known as ultra microscopic structure. They are ultra microscopic because light microscope is unable to study structure or ultra structure of viruses in detail, or but in some cases, in some books, there is a condition you can use some stains to study some stains for larger viruses to study on light microscope. But recommended way is the use of electron transmission electron microscope for the study of viruses. uh, the unit for measurement of viron is size is nanometer. Viruses vary widely in size from 20 nanometer to 300 nanometer. The largest among them is pox virus. पॉक्स वायरस जिसका साइज जो है वो 300 नैनोमीटर है एंड इज एज लार्ज एज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विच इज इक्वल टू द लार्जेस्ट वायरस which is pox virus. And the smallest viruses are parvoviruses, about 20 nanometer in size. लार्जेस्ट वायरस और स्मॉलेस्ट वायरसेस कौन से हैं, इनका साइज़ कितना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है. ये जितनी भी लाइंस हैं इनमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं और ये यूएचएस में आ चुके हैं, बहुत सारी जगहों पर यूएचएस में पूछे जा चुके हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स को.
How we can study wire? How we can measure size of wires? A simple question. There were a few techniques, a few methods to study size of wires. Says first method was passing them through colloidal membrane. In simple wording, it was an earliest method in which different pore size membranes were used to study wires' size. Uh, the earliest method of estimating the size of virus particles was by passing them through colloidal membrane filters. इट मीन्स कि जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर पोर साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। एक फ़िल्टर पेपर अगर एक पोर साइज़ का, दूसरा उससे छोटा है, उसमें पोर साइज़ और कम है। सो इस बेस पर जो है साइज़ और वायरस का साइज़ जो है वो मेजर किया जाता था। Another important and easy way is the study of electron through electron microscopy. Transmission electron microscope is recommended for the study of structure of viruses, structure and the size of viruses. And the third important technique or method for the study of size of viruses is the sedimentation in the ultracentrifugation. Centrifugation technique is very useful for the study of different sizes of particles. Viruses size could be calculated from the rate of sedimentation of virus in the ultracentrifuge with the development of ultracentrifugation with the development of ultracentrifuge. इट मीन्स कि एक ऐसी सेंट्रीफ्यूज जिसमें वायरस को भी सेंट्रीफ्यूज किया जा सके उसको डेवलप करना पहले ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो हमें कोई ऐसी सेंट्रीफ्यूज बनानी है जो कि उनको भी सेडिमेंटेशन में, उनको भी जो है इस प्रोसेस में ला सके। जो ग्रेविटी की वजह से प्रोसेस है कि साइज़ के लिहाज से डिवीजन हो जाए, तो जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही वो जो है वो बॉटम की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। तो इट मीन्स हम वायरसेस की स्टडी इस टेक्निक से भी कर सकते हैं। एंड अनदर इम्पोर्टेंट मेथड वाज द कंपैरेटिव मेजरमेंट्स बाय इन इसमें क्या होता है, हम इसमें ना एक रेफरेंस सेट कर लेते हैं वायरस को। जैसे कि इसमें रेफरेंस सेट किया गया है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरियोफेज, वो बैक्टीरियोफेज वायरस जो स्टेफ को डैमेज करता है और इसको उसको रेफरेंस रखकर हम डिफरेंट वायरसेस को उसके साथ कंपेयर करके उनका साइज डिसाइड करते हैं इन सिंपल वर्डिंग। ठीक है। The overall shape of virus particle varies in different groups of viruses. मतलब कि different groups में viruses की different shapes हो सकती हैं। Most of animal viruses are roughly spherical. Some are irregular or pleomorphic. It means they have a not specific shape. They few जो pleomorphic हैं उनकी बहुत सारी shapes भी हैं और sometimes shapes vary भी कर सकती हैं, लेकिन वो virus वही होगा। Pox viruses are brick shaped. Rabies virus is bullet shaped, and the tobacco mosaic virus is rod shaped virus. बैक्टीरियोफेज हैव अ कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड कर ले, बैक्टीरियोफेज फेजिस या फाजिस हैज़ कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी, और वो इन्फेक्शियस पार्टिकल वायरस का जो कि एक्स्ट्रा सेलुलरली पड़ा होता है लेकिन इन्फेक्शियस होता है उसको वायरोन कहा जाता है। सो द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज़ नोन एज वायरोन। Important thing, structure and chemical composition of viruses. Viruses usually with respect to structure, viruses have four different structure: viral capsid present outside the virus, and we will study virus symmetry. In this topic we will study enveloped and non-enveloped viruses. We will study viral nucleic acid. What is nucleic acid of virus? DNA है या RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? So we will discuss these four parameters in this
structure and chemical composition of viruses. Now, what are the viral capsids? Viral capsid actually, viruses consist of nucleic acid core surrounded by a protein coat called as a capsid. A virus is surrounded by a protein coat. Protein is present. Structural protein is present in the outside of the virus, which is known as कैप्सिड. प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो मिलकर कैप्सिड बनाती हैं. सम नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज प्रेजेंट along with genome inside the cell, but we are dealing with the capsid, so capsid proteins are structural protein. जो कि ये स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एक्सप्रेशन, मतलब कि ये कहाँ से बनती है, इसका जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए या वो वायरस के जीनोम में होती है. ठीक है, ये प्रोटीन्स जो हैं ये होस्ट की प्रोटीन्स नहीं होती, ये बात याद रखिएगा. दीज स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एज वेल जो आर पार्ट ऑफ वायरस आर एक्सप्रेस्ड बाय वायरस जीनोम. फॉर एग्जांपल आरएनए या डीएनए वायरस है तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है कि वो ये प्रोटीन्स बनाएगा. Capsid will along with its enclosed nucleic acid is known as nucleocapsid in simple wording or simple terminology. How capsid forms? Capsid are formed with the combination of capsomeres. Capsomeres collectively form capsids. Capsomeres जो है वो मॉर्फोलॉजिकल यूनिट भी आप उसको कह सकते हैं of capsid. The chemical unit of capsid are polypeptide molecules which are arranged symmetrical to form molecules and impenetrated shell around nucleic acid core. It means capsomeres are formed by the combination of 5 or 6 layers of protomeres. Protomeres क्या है? Protomeres are simple layer of polypeptide chain, a simple protein chain, a 5 to 6 or combination of protomeres forms capsomeres, and the combination of capsomeres form capsid. So we can, if we want to study detail about capsid, if we want to study protein nature of capsid, we should go for the study of protomeres, because protomeres collectively forms capsomere and then capsid. So we should study the protein nature of protomeres. What are the function of capsid? Capsid is the, as you know, capsid is the outer membrane, so it protects the viral genome from physical destruction and enzymatic inactivation by nucleases in biological material. Nucleases enzymes are those enzymes which are involved in the cutting of DNA, which are involved in the damaging of DNA, which are involved in the damaging of genetic materials. So for the survival of virus, डीएनए और आरएनए को सेव रहना चाहिए है, उसको सेव रखना है. So for the preservation or for the protection of डीएनए और आरएनए और nucleic acid of virus, capsid plays protective role. It's cause resistance against nucleases enzymes or physical destruction. It also provides binding sites which enables the virus to attach to specific receptor sites on the host. Please note down, every virus is host cell specific. It means every virus needs specific receptors for binding. हर वायरस किसी भी रिसेप्टर पर जाकर बाइंड नहीं हो जाएगा. HIV virus can damage only T cells because receptors, CD4 receptors are present on T cells, and HIV virus binds only with CD4 receptors. As far as coronavirus is concerned, ACE virus is present on lung cells. So
coronavirus binds with the ACE receptor which are present on the lungs cells. So binding site भी कैप्सिड जो है वो बाइंडिंग साइट भी प्रोवाइड करता है, वो बाइंडिंग को भी जो है वायरस की बाइंडिंग को भी वो करवाता है, प्रमोट करवाता है, ठीक है। It facilitates the assembly and packaging of viral genetic information. In simple wording, के जब रेप्लिकेशन होती है तो उसके लास्ट स्टेप में, जब नए वायरस बनता है तो उसके लास्ट स्टेप में होती है असेंबली एंड पैकेजिंग, ठीक है। सो कैप्सिड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी पार्टिसिपेट इन दी असेंबली एंड पैकेजिंग ऑफ वायरसेस. Then viruses, it serve as a vehicle of transmission from one host to another. इन सिंपल कैप्सिड नहीं होगा तो डीएनए अकेला ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, डीएनए एंटर भी नहीं कर सकता, बिकॉज जो बाइंडिंग साइट हैं वो प्रोटीन जिन्होंने अटैचमेंट करवानी है आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैप्सिड. सो विदाउट कैप्सिड वायरल आरएनए, वायरल जेनेटिक मटेरियल इज are unable to viral genetic material are unable to enter into the host cell. सो अब डीएनए आप सेल के पास भी डीएनए ला कर रख देंगे वायरस का, तभी वो जो है एंटर नहीं हो सकता, बिकॉज proteins which are responsible for the attachment to the receptors on the cells of on specific cells are present on the surface of capsid, or on the surface of viral capsid. So it is antigenic and specific for each virus type. So it is antigenic, it means the capsid is also virulence factor for viruses. वायरसेस जो कैप्सिड है वो इसके ऊपर डिफरेंट एंटीजेंस होती हैं जो कि विरुलेंस कॉज कर सकती हैं, ठीक है। देन इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इन द होस्ट डिफेंस टू वायरस इन्फेक्शन. सो इट इज़ जो है होस्ट के जो डिफेंस सिस्टम है उसको रेजिस्ट करना भी कैप्सिड जो है का काम है, उसको जो है उससे लड़ना भी, ताकि जीनोम को सेव रखा जाए. It provides the structural symmetry to the virus particle. In simple thing, every virus have their own symmetry. There are few types. There are few symmetries of viruses. We will deal in coming slides symmetry of viruses. But capsid form the symmetry of viruses. Way of attachment of capsomeres is responsible for the classification classification of symmetry of viruses, of different viruses. There are usually three types of symmetry of viruses: icosahedraл viruses, helical viruses, and complex symmetry. आइसोसेड्रल सिमेट्री जो है वो कैसी होती है, हेलिकल सिमेट्री कैसी होती है, कम्प्लेक्स सिमेट्री क्या होती है. सिमेट्री जो है वायरस की बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इन विरुलेंस, इन सर्वाइवल एज वेल. सो इन अनफेवरेबल कंडीशंस और फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी they survives with the help of symmetry. So symmetry is an important part for the viruses. What is isosceles symmetry? You can see in diagram there is an isosceles symmetric virus capsid आपको जो नज़र आ रहा है, polygon with 12 corners. It is actually a polygon geometric shape with 12 corners and 20 sides So each side is in the shape of an equilateral triangle. You can see there are triangles, there are number of triangles are present on the surface of capsid. So two types of capsomeres constitute the isosceles capsid. Two types of capsomeres, pentose and hexones capsomeres form the structure of capsid. They are so there are always 12 pentose. There are always 12 pentose, and
but the number of hexons varies with the virus groups. So pentose and hexon, actually it's a two-dimensional structure. In three dimension you can study virus, you can study all sides, all characteristics of isohedral virus. So there may be DNA viruses, there may be RNA viruses, but most of the DNA viruses. So DNA viruses, herpes virus, parvovirus, and papova virus, or have isohedral symmetry. In RNA viruses, picorna virus and reoviruses, or are consist of isohedral symmetry. The nucleic acid and the capsomeres are wound together in the form of helix or in the form of spiral, and this symmetry is known as helical symmetry. You should know, or you should know about helical shape. सो हेलिकल शेप में ही आपस में कैप्सोमेयर बाइंड करते हैं. अब देखें, कैप्सोमेयर की बाइंडिंग के जो वे है, सिमिट्री डिपेंड कर रही है बाइंडिंग ऑफ capsomer, how capsomers are going to bind, then symmetry डिफाइन होती है. और ये बाइंडिंग ऑफ कैप्सोमेयर्स की इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है? तो इंफॉर्मेशन ऑफ कैप्सिड फॉर्मेशन और बाइंडिंग ऑफ कैप्सोमेयर्स is present in the genetic material or nucleic material or genome of the virus. RNA, in RNA और DNA, it depends कि वायरस कौन सा है. RNA, mostly RNA viruses. Helical symmetry exists mostly in RNA virus because it is not suitable for DNA viruses. So single stranded RNA viruses, influenza, parainfluenza, rabies viruses are helical in nature. They are unsuitable for the helical symmetry, is unsuitable for DNA viruses. What is complex symmetry? If many viruses are not helical in nature, many viruses are not isohedral in symmetry, so they have combination of both. They are different in they are different from isohedral and helical, and from helical as well. So this symmetry is known as complex symmetry. Bacteriophage has complex symmetry. They have a combination of isohedral or helical symmetry as well. And pox virus is also complex in nature. Viruses may be enveloped or non-enveloped. Non-enveloped viruses usually known as naked viruses. What is enveloped we will study in our next slides. What is enveloped? You can see in your left side there is a viruses which is with enveloped, so it is enveloped viruses. And in right side diagram you can say कि ये है non-enveloped या naked virus. What are the enveloped viruses? So we should start about enveloped viruses. The envelope or outer covering of virus containing lipid is derived from the plasma membrane of host cell. What is enveloped? Envelope is present is outside of the capsid. Capsid is proteinaceous in nature. Capsid is composed of with protein, different capsomeres, and capsomeres are protein. But from at outside of the capsid, there is an other layer of another layer of lipids is present, and this lipid layer is known as envelope. So envelope envelope is lipid in nature, but the capsid is proteinaceous in nature. And capsid formation, information for capsid formation is present in the genome of virus, in the genome of virus. But हाउ इन्वेलप फॉर्म वे, या फिर इन्वेलप फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है? इन इन्वेलप ड्राइव फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल ड्यूरिंग द रिलीज आफ्टर रेप्लिकेशन.
जब आपको रेप्लिकेशन का टॉपिक पढ़ाया जाएगा ना, उसमें आप देखेंगे लास्ट स्टेप में क्या होता है कि वायरस जो हैं, एक वायरस से जब बहुत सारे वायरसेस बने तो वो रिलीज़ होते हैं। जब वो रिलीज़ होते हैं दैन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वायरसेस लिपिड्स को वहाँ से कैरी करके इन्वेलप बना लेते हैं। सो दे ड्राइव, सो enveloped, the information for the envelope is not present in the genome. Usually, information for the capsid is present in the genome of virus, but the envelope is derived from the plasma membrane of host cell. Usually, they are glycoprotein in nature. Lipids from host cell. In simple wording, protein is virus encoded. So it means capsid information for capsid formation is present. Yeah, information for structural or non-structural protein information for virus is present in the genome of virus. ठीक है. Usually, capsid is envelope is 10 to 15 nanometer thick in size. Some enveloped viruses have outer projection like spikes or peplomers. These spikes helps in the survival of virus. Spikes helps in the attachment of viruses to the different surfaces, to the different cells. So they have antigenic, biological and chemical properties. So envelope has their own antigenic, biological and chemical properties. uh, Another important feature of envelope is envelope viruses are susceptible to ether and out other organic solvent, because envelope is lipid in nature, and lipid is an organic compound. Ether is also an organic compound, or other disinfectants. Most of the disinfectants are organic in nature, so organic can dissolve organic nature. So lipids gets dissolved in the ethers or ethanols. So अगर इन्वेलप डैमेज हो जाता है तो उससे क्या होता है, वायरस की विरुलेंस मिनिमाइज हो जाती है और समटाइम ख़त्म भी हो जाती है. अब इन कोरोना केस में क्या है, कहा जाता है जो सैनिटाइजर यूज़ करें, एथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर. यू शुड यूज़ एथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर बिकॉज एथेनॉल कैन डिसॉल्व envelope of coronavirus. So coronavirus become ineffective or less virulent. Or treatment with ether result in the loss of lipids, leads to the loss of infectivity. ठीक है, तो इन्फेक्टिव नहीं रहता वायरस, ज़्यादातर वायरसेस में ये देखा गया है. So what are the functions of spikes which are projecting out from the surface of envelope? जो पेप्लोमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, in mature virus particles the glycoprotein often appear as projecting spikes. So peplomers are glycoprotein in nature. These are known as peplomers because peplamine is from peplus means meaning envelope. सो पेप्लोमेयर जो है वो एक्चुअली जो है इन्वेलप्स के साथ ही अटैच होते हैं. अ वायरस में है मोर देन वन टाइप्स ऑफ पेप्लोमेयर्स. फॉर एग्जांपल, इन इन्फ्लुएंजा virus carries two kinds of peplomers: the hemagglutinin, which is triangular spike, and neuroaminidase, which is mushroom shaped structure. So peplomers जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं एक वायरस पर. ठीक है, अब उनका फंक्शन क्या है उस लिहाज से भी डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, इन्वेलप जो है, इन्वेलप की जो अपनी जो है वो एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पीछे पढ़ ली. अब जो है many peplomers mediate attachment of virus to the host cell. The most important function of peplomers is they mediate attachment of virus to the host cells receptors to initiate entrance of viral genome into the cell. ठीक है,
वायरस की मशीनरी को सेल में भेजना है तो उसके लिए पेप्लोमेर्स अटैच होते हैं वायरस की सरफेस पर, जिसके बाद आफ्टर जो सेल की मेम्ब्रेन को रप्चर करके उसका जीनोम जो है वायरस का वो सेल में भेज दिया जाता है। ठीक है। Next important function is the attachment to the receptor. Some viral glycoprotein also attach to the receptors on red blood cell, causing these to agglutinate. Those peplomers which are heme agglutinate in nature, they binds with the receptors on RBCs, red blood cells, and cause clotting of blood, cause जो है agglutination of RBCs, which this is known as heme agglutination. So heme agglutinin viruses are dangerous because they cause agglutination of blood in our body. So another important function of peplomers is its enzymatic activity. Other glycoprotein possess enzymatic activity like neuraminidase. So those peplomers which are neuraminidase or mushroom-like peplomers cleaves neuroaminic acid from host cell glycoprotein. So our body has some good acidic or some good enzymes or some good chemicals like neuraminimic acid, जिसको तोड़ देता है न्यूरोमाइनेडेज एंजाइम और ताकि उस सेल में एंटर हो सके। ठीक है। मेजर एंटीजेंस ग्लाइकोप्रोटीन्स आर आल्सो मेजर एंटीजेंस फॉर प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी। सो पेप्लोमेयर जो हैं ये भी एंटीजेनिक नेचर होती हैं, इनके एंटीबॉडीज कैन बाइंड विद पेप्लोमेयर्स एंड इम्यूनिटी जो है वो हमारी पेप्लोमेयर्स के अगेंस्ट डेवलप होकर वायरस को किलिंग इस तरह करने में भी इन्वॉल्व है। What is viral nucleic acid? In the center, in the inside of capsid, there is a genome of virus is present. Virus contain a single kind of न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए। एक टाइम पे एक वायरस जो है या तो वो आरएनए वायरस होगा या तो वो डीएनए वायरस होगा। एक वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए वायरस जो है डीएनए या आरएनए को नहीं ऑब्जर्व किया गया, मतलब ऐसा कोई वायरस नहीं मिला जिसमें डीएनए और आरएनए हो। ठीक है। डीएनए और आरएनए इनकोड्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन necessary for the replication of, especially for the replication of viruses, as well as the formation of structural and non-structural protein of viruses. So nucleic acid, as you know, nucleic acid is responsible for the information or transfer of the or expression of the information of genetic information. So viral nucleic acid is also responsible for the formation of structural or non-structural proteins of the viruses. But this nucleic acid, the genome may be single stranded or double stranded. So circular और लीनियर एज वेल, और सेगमेंटेड भी हो सकते हैं और अनसेगमेंटेड भी हो सकते हैं, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट भी हो सकते हैं। और इसी वजह से जो है बहुत सारी जो टाइप्स हैं वो क्लासिफिकेशन की गई हैं, फैमिलीज़ को बनाया जाता है। बहुत सारी फैमिलीज़ में जो वायरस हैं वो डिवाइड इसी वजह से किए जाते हैं। इसी जो है कि आरएनए वायरसेस, डीएनए वायरसेस जो हैं, जैसे कोरोना वायरस इज़ अ फैमिली ऑफ आरएनए वायरसेस। इस तरह अगर बात करें जो एचआईवी वायरस जो है वो भी आरएनए वायरस है। तो मतलब पूरी की पूरी फैमिलीज़ बनाई जाती हैं इसी बेस पर के जो आरएनए है, डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड है और डबल स्टैंडर्ड है। सो आप लोगों को वायरस के जो बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रक्चर और इनके बारे में काफ़ी हद तक जो है वो बता दिया गया है। चूँकि आप लोगों की जनरल वायरोलॉजी है, ज़्यादा वायरोलॉजी आप लोगों ने नहीं डीप में स्टडी करनी, इसलिए आप लोगों के लिए ये लेक्चर जो है वो स्लाइड जो हैं वो एनफ हैं। ठीक है। सो आप लोग जो हैं इसके बारे में जो क्वेश्चन हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं, अदर सोर्सेज से पूछना चाहें तब भी पूछ सकते हैं। आप लोग इसको जो है अपनी लेविंसन माइक्रोबायोलॉजी से स्टडी कीजिएगा।
वहाँ पर आप लोगों को एनफ कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोग इस स्लाइड से भी स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को ये सारे का सारा जो है बेसिक्स जो है ऑफ वायरोलॉजी, बेसिक्स ऑफ वायरोलॉजी ही आएंगी। होपफुली वी विल नॉट गो फॉर द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक वायरसेस और मतलब स्पेशल वायरोलॉजी को हम स्टडी नहीं करेंगे। बस इन नाउ इन अदर लेक्चर्स वी विल स्टडी ससेप्टेबिलिटी टू फिज़िकल एंड केमिकल एजेंट्स, और इसके अलावा हम जो है उसके बाद देख सकते हैं हीम एग्लूटिनेशन फिनोमिना को देख सकते हैं, वायरल हीम एग्लूटिनेशन को। और another important topic we will discuss later about viral replication. Most important topic will be a viral replication. So now this presentation is over. आप लोग जो हैं पढ़ें, बुक से पढ़ें, जो नहीं समझ आता मेरे से पूछ लें।